ओके, माहौल कुछ ऐसा है कि जिम आज बिल्कुल खाली है और मैं भी बिल्कुल खाली, क्योंकि कल का मैच जो था वो सो डिप्लीटेड कि आई कुडंट इवन स्टैंड देयर। लेकिन ठीक है, पता चल गया कि नाउ आई एम डन। जितना मैं डालूंगा उतना ही यूज़ कर पाऊंगा। आई थिंक द रिजर्व्स आर गॉन ऑफ माई बॉडी। वीक 8 है और ये मेरे नाक में चला गया। आई एम हैविंग माई प्री वर्कआउट व्हिच इज न्यूट्रेक्स का आखिरी दिन है इसके। अरे बाप, मंडे को क्वाड्स नहीं की थी, दो मेरी काफ अभी तक जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन स्टिल आई हैव टू डू इट। जैसे तैसे कर लेंगे। आई एम फीलिंग वेरी लो एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द डाइट डिप्लीशन। संडे को आई विल शो यू माय एब्स और सी आई एम वेरी लो। बिफोर दिस दैट्स व्हाई आई डोंट टॉक इन द कार एनीमोर। आज शूट भी है सो आई हैव 2 आवर्स। जिम बिल्कुल खाली है, ऐसे ही होता है। तो अब जिम शुरू करते हैं, गाने में मरते हैं। सबसे पहले चिन अप्स और क्रॉस ओवर के 6 सेट, देन ऐप। तो आ जाओ। Let the flame fill the night. When we touch, then we ignite. Let the flame fill the night. You and me light up the sky. 'Cause we are fire and we're burning. Won't put it out, even though we're hurting. Let the flame fill the night. When we touch, then we ignite. I did my ab, day 2 of that, and then I did 3 sets of 30 reps each, leg raises and crunches. क्योंकि मैं 2 abs टच करता हूँ, या तो 20 या crunches, लेकिन leg raise daily because it's the most difficult part कि belly का नीचे वाला portion जो है उसको ऑन करें। See, this is my state. आज हम पहली बार जिम से ऐसे बात कर रहे हैं। This is my state before my muscle. I'm done. मेरा pre-workout कहाँ है मुझे नहीं पता. It's gone. I'm in fast state. पानी पी रहे हैं, पानी का पता नहीं चलता कहाँ जाता है. See, my voice is also a bit deeper. That's because अब जान नहीं है. अच्छा, I wanted to talk about this supplement which is in cage. This is for during the workout. It's amazing. कल मैंने पहले दिन लिया था and I felt it कि it's so good. कि आप जैसे शुरू करते हो आफ्टर 2 or 3 steps you feel very very full and you feel good. तो संडे को I will talk about this because the BCAAs I take and now it will go on the shoot. मैं shoot पे पीऊंगा वो because ऐसा वो कोई जादू नहीं है. It's just electrolytes replenish करता है, रिकवरी में मदद करता है, that's it. लेकिन इन केज में और जो भी है जिस तरह जिम सप्लीमेंट्स का भी आता है, they are for this purpose कि आप during workout जैसे मेरी मौत हो चुकी है, so you drink this and you start working out. Remember, I'm still in fast state, मतलब मैंने कोई solid चीज नहीं खाई. I will show you, अगर अभी तक गाने ना चले जिम के, I will talk to you again during my muscle and then I will show you कि मैं क्या क्या करता हूँ. ये एक गया स्पून. मैं ज़्यादा पानी पीता हूँ, बहुत ज़्यादा पानी पीता हूँ बिकॉज जैसे मैं पानी निकालूंगा बॉडी में से यू विल सी। संडे को जब मैं आपको शॉर्ट्स दिखाऊंगा जो मेरी मौत हो चुकी है तो क्या फ़र्क पड़ता है। नाउ आई हैव टू डू क्वाड्स, वेरी सिंपल एक्सरसाइज, लेकिन स्टिल बिकॉज आई एम डिप्लीटेड नहीं हो पाएगी, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट। चलो पीते हैं इसको शुरू।
वीडियो हम कर पाएंगे। आई शोड यू कि आई हैड दैट चिली कैंडीलैंड, आप कुछ भी ले सकते हो टू स्पाइक योर इंसुलिन इस स्टेज पे। दिस इज जिम स्टिकोनीज डाइट प्लान, आई एम फॉलोइंग इट थोड़ा बहुत, क्योंकि वो कहता है कि कार्ब जो है शुरू में यू हैव टू टेक 1.5 grams पर pound of body weight, but I am taking 1 grams less than that. That's why I'm so depleted. उसके कहने के मुताबिक I have added casein and isolate. I'm not taking any chia seeds or almonds for this week, क्योंकि मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा और डिप्लीशन करूं to see the definition of body, क्योंकि उसके बाद from Monday I will start having carbs, क्योंकि जो 6 week का उसका प्लान है that requires energy. So this is my post-workout meal now for this week. It's oats, 50 grams of oats, पानी के अंदर, एक scoop of isolate and casein. Overall the workout was there because pump भी नहीं किया body ने as much, क्योंकि body में जान ही नहीं, I'm taking out. And still I'm having lots of water. I had about 3 liters of water so far, और ये भी पानी. तो चल रहा है. I will have shower and straight to shoot. It's already 1:38 था. तो दोस्तों ये कहानी, अभी हम बहुत दूर हैं और ये हाल है हमारा, लेकिन टेंशन नहीं, मंडे से ज़रा ज़िंदगी में बेहतरी आएगी. पॉज करते हैं बंद और चलते हैं काम पे.